Hello everyone, I'm Reenu, the Client Success Manager of Finner PMS. Today we'll be talking about how to use a restaurant module in the Finner PMS. For those who don't know what Finner PMS is, it is a cloud-based property management software that helps to manage your property bookings, finances, and reservations. The restaurant module is for those who are having a hotel or service apartment and you have a separate restaurant where people can come in and order their meals and you don't want to attach their order to any bill and you want to have a separate bill for that. Then this module comes in very handy. So let's start the process. सबसे पहले आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट पे क्लिक करना है. उसके बाद दिस इज़ द लैंडिंग पेज जो ओपन होगा. उसके बाद यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी चूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आपको गेस्ट का टाइप सेलेक्ट करना है. यहाँ पे यू हैव टू एंटर द गेस्ट नेम. आई एम एंटरिंग टेस्ट. यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल नंबर. लाइक आई एम चूजिंग टेबल नंबर 6. यहाँ पे जो भी आपके मेन्यू के अकॉर्डिंग आपकी फूड की सब कैटेगरीज होंगी, वहाँ से आपको एक कैटेगरी चूज़ करनी है. लाइक आई एम चूजिंग ब्रेकफास्ट आइटम्स and in that I am choosing boiled eggs. यहाँ पे आपको अपने खाने की क्वांटिटी चूज़ करनी है. लाइक आई वांट टू ऑर्डर 2 boiled eggs. देन आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है. देन दिस इज़ द ऑर्डर्ड आइटम विद द क्वांटिटी. अब इसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है. देन ये एक पॉपअप आएगा जिसमें आएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड. देन यू कैन जस्ट क्लोज दिस. यहाँ पे you can see your running orders. Like I have just placed this order for table number 6. आप इस पे क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद this is the order summary. And if you want to add any more items, आप यहाँ पे add more items to cart पे क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे you can choose the category. Like I am choosing Chinese and I'm adding Maggi. So I'm adding 2 plates of Maggi and click add item. यहाँ पे मैंने 2 मैगी ऐड कर दी हैं. सो दिस इज़ द लाइक फाइनल बिल. अब आप प्रिंट क्यूटी पे क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये आपकी क्यूटी आ जाएगी. यहाँ पे गेस्ट का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, टेबल नंबर, हर चीज़. एंड दिस इज़ योर आइटम्स ऑर्डर्ड. देन क्लिक ऑन गो बैक. सो दीज रेड वंस आर योर ओल्डर ऑर्डर्स और जो ग्रीन है वो अभी आपके रनिंग ऑर्डर्स हैं. देन इफ इट्स बिन टाइम और आपको फाइनल बिल पे करना है, then you can just click on the order and you can just give the final bill to your guest. Then just if this is the whole order, then you can just click on print final bill. Then you can just select the mode of payment. For example, I'm choosing, you can choose cash, debit card, credit card, anything. So I'm choosing debit card. Then you can just click on print final bill. So ये आप इसकी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर लाइक बिल जो आप अपने गेस्ट को दे सकते हैं. दिस इंक्लूड्स योर टैक्स एंड एवरीथिंग. सो लाइक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. If you have any questions or suggestions, please feel free to comment below.